Good morning. Today I want to address people who are running the labor room or manning the birthing room, I would say. So we want to give respectful care to all our laboring women and we want to save their lives. तो हम बात करते हैं ending preventable maternal mortality की, मतलब कोई भी मदर को हम मरने ना दें जो हम प्रिवेंट कर सकते थे। और हमें मालूम है कि ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज, जिसकी आज मैं खास बात करने वाली हूँ, वो एक मेजर किलर है ना, 3 मेजर किलर में से। तो जब भी वो ब्लीड करती है हमें ज्यादा टाइम नहीं देती है। एक तो प्रेगनेंसी में वैसे ही मेटाबॉलिज्म थोड़ा बहुत हिला हुआ होता है, दूसरा हम ब्लड लॉस को एस्टिमेट ही नहीं कर पाते, इतनी जल्दी ब्लड लॉस हो जाता है, बाल्टी में चला जाता है, कभी सोक्स में चला जाता है, तो हम एस्टिमेट नहीं कर पाते। और तीसरा, हम उसको बड़ी जल्दी से हैंडल नहीं कर पाते। तो ये एक बड़ा ही टीम वर्क है। और हमने सुना है पिन गर्ल के बारे में कि हम कॉल करें कि कॉल फॉर हेल्प, और कौन हेड एंड पे क्या क्या कर देगा, कौन ये फेमस पिन गर्ल बताती है कि कौन हाथ पे जो खड़ा है और कौन पेरिनियम पे जो खड़ा है वो क्या कर लेगा। तो आयन डोनाल्ड ने क्या बोला, ये बोला कि हम बहुत सारी बीमारियों में हम गोल्डन आवर की बात करते हैं कि 1 घंटे के अंदर ये दवाई दे दी तो स्ट्रोक बच जाएगा, और यहाँ पर भी सेप्सिस में भी हम गोल्डन आवर बंडल की बात करते हैं। मगर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज जो है, जो पीपीएच एपीएच है, वो हमें इतना टाइम नहीं देती। और आयन डोनाल्ड सर जिनकी हम किताब पढ़ते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, उसमें उन्होंने क्या बोला कि हर 1 घंटे के 60 मिनट होते हैं और हर सेकंड काउंट करता है पीपीएच में। तो हमें जल्दी से करने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए। तो उन टूल्स में हमें क्या चाहिए, पीपीएच किट, सब कुछ एक ही जगह पर तैयार पड़ा हो। तो उसके बारे में आज अभी आप जो वीडियो देखोगे, दैट इज बाय डॉक्टर तरुणा दुआ, कि वो किस प्रकार किट में सब कुछ रखती हैं और कितने सॉर्टेड तरीके से रखती हैं। तो यहाँ पे मैं 5S की भी बात करूंगी। आप कहते हो ना कि 5S के बारे में आपसे पूछा जाता है जब क्वालिटी की असेसमेंट्स होती हैं या कुछ होता है। तो पीपीएच किट तो हमने बना ली। बहुत जगह मैं देखती हूँ कि छोटी सी ट्रे में होता है, उसको पीपीएच किट लेबल कर देते हैं कि चलो नंबर मिल जाए, मगर उसमें सब कुछ वो नहीं होता जो 1 मिनट के अंदर चाहिए। तो थोड़ा सा डब्बा बड़ा होना चाहिए, वो डॉक्टर तरुणा दुआ आपको बताएंगी। उसमें जो चीजें हैं, पहले हमने सेट असाइड कर लिया कि ये हमें चाहिए, स्टैंडर्डाइज कर लिया, लिस्ट बना ली थ्रू आउट द स्टेट। हमने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ड्रिल्स भी बनाई हैं पीपीएच के ऊपर, और किट की चीजें भी बताई हैं स्टैंडर्ड की, ये होना चाहिए। वो कर लिया, सेट कर लिया, उसको हमने सॉर्ट करके छोटे डब्बों में रख देना है। जैसे जो कैथेटराइजेशन वाली साइड पे खड़ा है, वो कैथेटराइजेशन वाले डब्बे में दोनों तीनों चीजें मिल जाए। हमको ब्लड सैंपल लेना है तो जिसने कैन्युला लगाना है उसको वो चीजें मिल जाए कि लैब में जो जो जाना है, और एक पेन भी मिल जाए, एक इन्वेस्टिगेशन स्लिप भी मिल जाए, वो सब एक जगह पे मिल जाए। तो ये सब डॉक्टर तरुणा दुआ आज आपको बताएंगी कि पीपीएच किट का कहाँ कहाँ होना जरूरी है, जहां पर भी हम जान बचा सकते हैं, जहां पर भी पीपीएच का चांस है। और ये भी कि किस तरह से वो चीजें पड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि फिर हम उसमें किट के अंदर ऐसे ऐसे ढूंढ रहे हैं, हाँ सब कुछ तो था, है ना। तो हम जो 5S बोलते हैं, वी सेट असाइड, वी सॉर्ट देम, वी शाइन देम, है ना। फिर सफाई में भी रखनी है, ये नहीं कि गंद है तो जल्दी जल्दी में हम इन्फेक्टेड कुछ कर रहे हैं, वो भी नहीं करना है। हाइड्रोजेनिक भी कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम स्टैंडर्डाइज करें और उसके बाद हम सस्टेन करें, मतलब रिप्लेनिश करें। ये नहीं कि पिछले बार पूरी 4 वैक्स पड़े थे, अब तो 2 ही वैक्स पड़े हैं, तो दूसरे के लिए फिर हम भागते हुए जा रहे हैं। और सही वाला वैक्स नहीं तो पूछते रहेंगे कि अच्छा अब रिंगर लाएं, क्रिस्टलॉइड लाएं, कोलॉइड लाएं, क्या लाएं। तो ये सारी चीजें एक जगह पे समझने के लिए और उसको रखने के लिए हमने जो बोला है कि ड्रिल्स करके रखिए, आप सीख लो किसका क्या रोल है इसमें। टीम का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मेक श्योर दैट द किट इज अवेलेबल इन अ रिप्लेनिश्ड फॉर्म, इन अ प्रॉपर 5S फॉर्म, एंड द पीपल आर यूज्ड टू यूजिंग इट। ड्रिल आप हमेशा करके रखो, चाहे होता है आपके यहाँ पीपीएच, आप बोलोगे साल में एक बार होता है मैडम, हमारी तो बहुत कम डिलीवरीज होती हैं, मगर नहीं, ये हम ड्रिल से हमेशा अवगत रहें और प्रैक्टिस में रहें, और तब हम जान बचा सकते हैं। एंड वी रियली डोंट वांट टू लूज एनी वुमन विद पीपीएच. इट इज अ प्रिवेंटेबल mortality. Thank you so much. So I'm Dr. Taruna Dua. I'll be demonstrating the PPH toolkit and all the components of it. The PPH toolkit should be stationed at whatever places you might need them. It should be there in your labor room. It should be there in your postnatal ward and the emergency OT, and even the emergency areas where you might receive a patient of postpartum hemorrhage. So you can take any box. Here I have taken this box, wherein I have labeled it outside as the PPH toolkit so that it can be seen easily. And I have also put a red sign to capture the vision of anybody who's asked to get it. So first of all, we have to have a baby apparatus with a stethoscope so as to take the vitals of our patient with PPH. We should have everything ready to cannulate the patient at one place so that we are not wasting our time in collecting things. We have all cannula. We should have the green cannula, the gray cannula, the 3-way connector. We should have all the vials
so that we can collect the sample for cross-matching and all the investigations like blood group, LFT, KFT, coagulation profile, serum electrolytes. We should have the micropore for fixing our cannula. The next step is to catheterize our patient with PPH. So we should have everything available for Foley's catheterization. We can have a 12 number or 14 number Foley's catheter, xylocaine jelly, distilled water to inflate the bulb of the Foley's catheter, and a Eurobag so as to fix the catheter. Now that we know that our patient is having PPH, most common thing, the atonic PPH. Here is the Eurobag for the Foley's catheter. In this box, I have placed all the drugs that are required for the medical management of atonic PPH. I have also labeled the name of the drugs over here: oxytocin, methyl ergometrine, carboprost, tranexamic acid, and mesoprost. So of all these, only mesoprost is the one which has to be kept at room temperature. Rest all need to be kept in the fridge. We have a shot of antibiotic available so that we can give the antibiotic as soon as it is required. Once we are doing the IV granulation, along with it, we have taken the sample, and then we should have our IV set available so that it can be connected and we can rush the crystalloids for the patient. We have the betadine required for Foley's catheterization. Here also I have the syringes which would be required, maybe to push, maybe to dilute, and a 100 ml saline bottle for the antibiotic shot. Now, once we have looked into the atonic PPH, the next is we have to rule out if it is the traumatic type of PPH. So I should have all things available for ruling out traumatic PPH. Here I have the sterile gloves. I also have the suture material, and plus I have an exploration set available wherein I have kept multiple instruments, of which the Sims speculum and the sponge holders are the most important. I also have in this box the gauze pieces, and we have the gumsy which is required for absorbing the bleeding. Now, if the patient has not responded to the medical management, I might need to step up. So I should have the things available for balloon tamponade. We can use the Foley's bulb using a condom for balloon tamponade, for which I should have a 50 ml syringe, because I know we waste a lot of time searching for the 50 ml syringe, or whatever is available in your setup. Like I have an Ilavi balloon in my kit, because if I know if need arises and I need to use a balloon, I have this balloon which I can use. Plus, I have also kept my forms easily accessible so that whenever I have to take a consent, a high-risk consent, consent for blood transfusion, consent for examination under anesthesia, all these things, I don't have to search for the forms, and everything is available. So all these things organized in one kit, the kit stationed in your labor rooms, in your emergency OT, for you to be accessible and for the right use without wasting.